Assalamu alaikum and good morning, dear students. I am your English teacher, Miss Hasina Dafar. In our today's class, we are going to write the planned masculine, feminine, okay? And you have to learn these words. आज की क्लास में जो masculine, feminine है 1 to 10 जो प्लान हुए हैं, मतलब जिसको जो आप लोगों ने लर्न करने हैं वो आप लोगों ने लिखने भी हैं और उसको आप लोगों ने याद भी करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये 10 मैस्कुलिन फेमिनिन जो गिवन है, ठीक है। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन दीज एंड देन यू हैव टू राइट ऑल दीज वर्ड्स ऑन योर शीट और in your rough register, okay? First, masculine feminine in Urdu. Masculine means muzakkar and feminine means muannas. मुजक्कर मुअन्नस, ठीक है। मैस्कुलिन स्टैंड फॉर मेल जेंडर एंड फेमिनिन फॉर फीमेल जेंडर। मैस्कुलिन में सारे हमारे पास मेल जेंडर मतलब कि मेल चीजें आती हैं, सारी बॉयज, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, ठीक है। अगर वो नर कैटेगरी में, ठीक है, जो बॉय कैटेगरी में जो भी एनिमल्स आते हैं उसमें या इंसान आते हैं तो उसको हम मैस्कुलिन कैटेगरी में डालते हैं। और इसी तरह फेमिनिन कैटेगरी में सारी गर्ल्स वगैरह को हम डालते हैं, मादा चीजें, ठीक है। तो आप लोग देखें जरा फर्स्ट वर्ड को। फर्स्ट इज फादर। इसका मतलब है मतलब कि अब्बू या बाप, वालिद, ठीक है। फादर इट्स फेमिनिन इज मदर, फादर मदर, ठीक है। अम्मी अब्बू। मैन वुमेन, ठीक है। मर्द औरत। बॉय गर्ल, लड़का लड़की। रूस्टर, रूस्टर के लिए हम कॉक का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, उर्दू में हम इसको बोलते हैं मुर्ग और इसका फेमिनिन है हैन, मुर्गी। मिस्टर एंड मिसेस। मिस्टर जो है हम यूज करते हैं मेल के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए जो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, हम मिस्टर मतलब बस रिस्पेक्ट देने के लिए उसके साथ मिस्टर लगा लेते हैं। लेकिन जो उसका दूसरी साइड पर लिखा हुआ है उसका फेमिनिन मिसेस, ठीक है। तो मिसेस का वर्ड जो है हम लोग मैरिड गर्ल्स यानी वुमेन के लिए यूज करते हैं, मिसेस शादीशुदा औरत के लिए, ठीक है। गैर शादीशुदा के लिए तो हम लोग मिस यूज करते हैं। तो मिस्टर का जो फेमिनिन है वो मिसेस है। अंकल, द नेक्स्ट इज अंकल, आंट। अंकल का वर्ड हम चचा, मामू, ठीक है, फूफा सबके लिए यूज करते हैं। और आंट जो फेमिनिन है ये चच्ची, मुमानी, फूफी, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं। इसी तरह जो टीचर्स, टीचर जो होते हैं, कुछ टीचर्स मेल होते हैं, कुछ टीचर्स फीमेल होते हैं। तो जो मेल टीचर्स होते हैं उनको हम सर बोलते हैं, ठीक है, सर। इसी तरह जो फीमेल टीचर हैं, जिस तरह के मैं आपकी फीमेल टीचर हूँ तो मैडम हसीना, ठीक है, सर, मैडम, ओके। द नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर, दादा या नाना। इसका फेमिनिन है ग्रैंड मदर, नानी या दादी। द नेक्स्ट इज कजन। कजन का वर्ड जो है हम लोग बोथ मेल फीमेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये जो है कॉमन जेंडर में आता है, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो कजन लड़का आपका मतलब कि मामू का बेटा हो या चाचू का बेटा या फूफी का बेटा, जो भी बेटा है या बेटी है वो दोनों आपके कजन ही होंगे। मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों यहाँ पर सेम है, कजन कजन। द नेक्स्ट इज हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस। हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस हम लोग जो है उर्दू में भी यही वर्ड यूज करते हैं, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस। अगर मैस्कुलिन मतलब मेल है, आपकी इंस्टीट्यूट का जो हेड है अगर वो मेल है तो वो हेडमास्टर है, और अगर वो फीमेल है तो हेडमिस्ट्रेस है, ठीक है। मतलब ये बस समझ लें कि प्रिंसिपल को बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये स्लाइड एक्सप्लेन कर दी। अब आप लोग अपना रफ रजिस्टर ओपन करें, उसमें आप लोग इंग्लिश पोर्शन ओपन कर लें। वी आर गोइंग टू राइट ऑल दीज
You are starting written practice. You need a pencil, ruler, sharpener, and eraser. First, draw margin lines. Okay, open your register. Show me. Draw margin lines on both sides. Then on the top, write serial number. English B, because it's the work of English B. It's the grammar work. CW for classwork. And date 17th May 2021. Your topic, write TOPIC topic, and then your topic, masculine, feminine. Write 1 to 10 in the bracket, then planned. Okay, these are planned for you. You have to learn all these words. Now, again write, first make a star, write masculine and feminine. Now, write number 1, just like this. Write the first word. The first word is father. F A T H E R. Father. Ammi. Okay. FATHER. Father. Its feminine is mother. 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 Have you written, dear students? Ammi, Abbu. Now moving towards the next line. Write with me in the next line. The second word is man. MAN, man. Admi, like your father is a man. Okay. Woman. WO. Just write WO and then put this man over here. MAN, woman. Your mother is a woman. Okay. Man, woman. Admi, aurat. Write neatly with sharp pencil with proper gap. Then number 3. Write number 3. The third word is boy. BOY, boy. Writing should be straight as you can. Okay, बिल्कुल सीधा लिखना है, तभी आप लोग नीट राइटिंग कर सकेंगे. बॉय, लड़का. Then its feminine is girl. GIRL, girl. लड़का, लड़की. The next is number 4 is rooster. ROOSTER, rooster. We can use another word for rooster, which is cock. COCK, cock. It means murg. Okay, murg. Yeah, murga. Okay, now its feminine is hen. HEN, hen. Murgi. Murga, murgi. Number 5.
Write number 5, just like me. Neat and clean, straight handwriting in 4 lines. Now it's the turn of the 5th one. Write M like this. Touch the 3 lines properly. M, R. मिस्टर हम लोग आदमी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, मेल जेंडर के लिए, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए. इट्स फेमिनिन इज मिसेस. राइट एम आर अगेन एंड देन राइट ओनली एस. मिसेस, मिस्टर, मिसेस. शादीशुदा औरतों के लिए यूज होता है मिसेस का वर्ड, ठीक है. Then moving towards the next line, number 6. Sixth one is uncle. U N C L E. Uncle. Write neatly there. Uncle, चचा, मामू, फूफा, ठीक है, सबके लिए अंकल का वर्ड यूज करते हैं. इट्स फेमिनिन इज aunt. 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 चची, ममानी, फूफी, ठीक है, सबके लिए आंट का वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं. इट्स द फेमिनिन. Now moving towards the next line, write 7. It's sir for male teachers. Sir, ठीक है, जनाब. And for female teacher, madam. The short form is ma'am. Ma'am, ठीक है, sir, madam. In Urdu, जनाब आलिया. Okay, sir, madam. Now moving towards the next line, write number 8. The next is grandfather. GRAND. Grand. One finger gap. FATHER. Father. Grandfather, dada ya nana. Its feminine is, write this grand again over here. Grand. 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 One finger gap. And the family, write grand over here again, and then the feminine of father is mother. Then write mother. MOTHER. Grandfather, grandmother. Dada, dadi, ya nana, nani. Okay. Now, number 9 is cousin. 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 Your cousins, okay. आपके चचा, मामू, फूफी, किसी का भी बेटा या बेटी जो भी हो, तो आपका कजन होता है या आपकी कजन होती है. बोथ आर सेम. द कॉमन जेंडर, राइट. ओके. COUSIN, cousin. Feminine is cousin.
cousin. Now number 10 is headmaster. Write HEAD, head, one finger gap, MASTER, master, headmaster, and its feminine is head mistress. HEAD, head, one finger gap, MIS, miss, MIST, missed, RESS, res, headmistress. उर्दू में भी हम हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का वर्ड इनके लिए यूज करते हैं। जिस तरह के मैंने आपको बता दिया कि इनका दर्जा प्रिंसिपल की तरह का ही होता है, किसी इदारे के सरबराह को बोलते हैं। ठीक है, अगर मेल है तो हेडमास्टर और अगर फीमेल है तो हेडमिस्ट्रेस। ओके, hope you all have understood. Now again look at your sheet and I'm repeating: father, mother, ammi, abbu. Second, man, woman, mard, औरत, boy, girl, लड़का, लड़की, rooster और cock, मुर्गा, hen, मुर्गी. Number 5, Mr, Mrs, Mr, Mrs. Okay, uncle, aunt, chacha, chachi या मामू, मानी, सर, मैडम, जनाब आला या जनाब आलिया, जनाब आला, जनाब आलिया, for male teacher, for female teacher. Okay, the next is grandfather, dada, nana, grandmother, dadi, nani, cousin, cousin, चचा का बेटा या चची की चचा का बेटा, चची चचा की बेटी, बेटा बेटी दोनों के लिए टर्म आ सकते हैं. हेडमास्टर and headmistress. Okay, we have completed. Check it all this. Okay, now okay, check it with your slide. Check it your sheet with this slide. If there's any missing word, then complete it. Okay, any questions? Raise your hands. Okay, now note down your homework. Learn and write masculine, feminine 1 to 10 in English portion of your rough register. Okay, आपने आज कल के जो ये मैस्कुलिन फेमिनिन हम लोगों ने किए हैं 1 से लेकर 10 तक, इसको याद भी करना है. ठीक है, और लिखना भी है अपने रफ रजिस्टर में. ओके, नाउ थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.